Hello students, today we will learn prime factors and prime factorization. So what are prime factors? As the name suggests, factors of a number which are prime are called prime factors. Let me clear it with an example. Let us take a number, say 18. Let us see its factors. 1 and 18 will be there, right? Then 2 9s are 18, 3 6 are 18. These are the factors of 18. Students, if you are not aware of how to find the factors, you can refer to my previous video on factors and multiples. The link for this is given in the description box. So coming back to the factors, 18 के कौन से factors हैं? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Now we have to locate the prime numbers, prime factors out of this. 1 is not a prime number. It is neither a composite number. ये हमने previous video में भी मैंने आपको बताया है. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 6 is a composite number, not a prime number, 9 is not a prime number, 18 is not a prime number. So only 2 and 3 are prime numbers. So we can say 2 and 3 are the prime factors of 18, right? Similarly, let me take one more example. Let me take 16. I'll factorize it. 1, 16, then 2 8s are 16, right? Then 4 4s are 16, right? Now locate the prime numbers out of these factors. Only 2 is the prime number, which is the factor of 16. So we can say 2 is a prime factor of 16. Another example, 25, factorize it. 1, 25 and 5 5s are 25. So here only 5 is a number which is a prime factor of 25. Got it? Means हमने सिर्फ क्या करना है, पहले उसके फैक्टर्स बना के उसमें से प्राइम नंबर्स को लोकेट कर लेना. प्राइम नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं, राइट? कोई और एग्जांपल ले लो, 8 ले लो. 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 8 2 4 8, राइट? तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ओनली 2 इज देयर. सो 2 इज अ प्राइम फैक्टर of 8, right? So in this way we can find the prime factors of any number. So can you find the prime factors of 48? Solve it first. I'll give you a 1 second break. Have you solved the factors? Factors of 48 are 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48. These are the factors of 48. So can you please tell me, out of these factors, which are the prime numbers? Yes, good. 2 is a prime number, 3 is a prime number, then anyone else? No. So we can say 2 and 3 are the prime factors of 48. Understood? So for your home assignment, you calculate the prime factors of 84, you calculate the prime factors of 36, you calculate the prime factors of 21, and then check it, right? Now moving ahead, the next topic is prime factorization. What is prime factorization? It is a method to express a given number as a product of its prime factors.
So let us take one example to make it clear. We'll be taking the same number 48. 48 को हम स्प्लिट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में. पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2. 2 से हमने डिवाइड करेंगे 48 को. 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 48. सो वी हैव गॉट द फर्स्ट प्राइम फैक्टर 2. नेक्स्ट 24 इज नॉट प्राइम. 24 को हम अगेन स्प्लिट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में. क्या बनेगा 2 multiplied by 12 is 24, right? Now another prime factor we have got 2. Next 12 is there. 12 को split करेंगे prime factors में. 2 multiplied by 6. Again third prime factor we have got 2. 6 is not a prime number, so we'll split it into prime numbers. 2 multiplied by 3 is 6, right? Now we see all the numbers we have got are prime numbers. We can say these are the prime factors. So we can write 48 as 2, this 2 multiply by 2 multiply by 2, then again multiply by 2, then multiply by 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, right? So this is known as prime factorization. What we have done, हमने 48 के सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लिया. मल्टीप्लाई करके अगर सारे प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे इट वी विल गेटिंग 48, राइट? कोई और एग्जांपल ले लीजिए. 72 ले लीजिए आप. 72 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 36, राइट? 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर. अब 36 को स्प्लिट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 18. 36 को सिंपली यू डिवाइड बाय 2, आपको 18 मिलेगा, राइट? ऐसे ही 18 को आगे स्प्लिट करो. सेकंड हमें 2 मिल गया. 18 को आप स्प्लिट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9, राइट? थर्ड हमें प्राइम फैक्टर 2 मिल गया. अब 9 को स्प्लिट करेंगे. 9 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. इट विल बी डिविजिबल बाय 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 इज बोथ द 3s आर प्राइम numbers. So these are the prime factors 1, 2, 3, 4 and 5th. So we can write 72 as 2 multiplied by this 2 multiplied by again 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72. So by this method we can prime factorize any given number. Using division method also, I'll explain you what is the division method to find the prime factors. Supposing you can take any number 84, right? Division method for prime factorization of any number. What you will be doing, you take 84, you divide it by first prime number 2. What you will be getting? 2 4s are 8, 2 2s are 4, right? Now quotient 42, again divide this quotient by 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2. Now it is 21 quotient. It is not divisible by 2. Next prime number 3, we will be dividing by 3. Yes, it is divisible by 3. 2 plus 1 is 3. 3 is divisible by 3. So 3 7s are 21. Then quotient 7 again divided by 7. 7 1s are 7. When you get 1, stop here. Now write down all the prime factors as a product. 84 can be written as a product of its 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. This becomes 84. These are the prime factors, and the method or the process is known as prime factorization. Let me take another example, say 2907. I'll be using the division method for the prime factorization. Firstly, can we divide this number by 2? No, it's an odd number. Let me check with is it divisible by 3? I'll sum up the digits. 2 plus 9, 11 plus 0, 11 plus 7, 18. Yes, it is divisible by 3. 3 9s are 27, 3 6 are 18, and 3 9s are 27, right? Again it is divisible by 3.
3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now 3 2 3 can be divided with 7? No. Then next prime number is 11. 11 is also not dividing this 3 2 3. Next prime number is 13. 13 is also not dividing this number. Then next is 17. Yes, 17 will be dividing this number. 17 ones are 17 and 17 into 19 will be, let us take one number 72. I'll find prime factorize it using divisor method. What I will be doing, 72 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर से. फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है. अगर डिवाइड करें 2 3s are 6 एंड 2 6s are 12. अब हमें क्वेश्चन मिला 36. इस क्वेश्चन को अगेन किसी प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे. लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2 से डिवाइड किया, 2 18s are 36. अगेन दिस क्वेश्चन शुड बी डिवाइडेड बाय द एनी प्राइम नंबर. 2 9s are 18. नाउ दिस 9 क्वेश्चन इज नॉट डिविजिबल बाय 2. क्यों नहीं डिविजिबल है, क्योंकि ये ऑड नंबर है. तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करेंगे. नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद कौन सा आता है, 3. 3 3s are 9. 3 को अगेन डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3. नाउ 1 आ गया हमारा. यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे एंड विल राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. इसके प्रोडक्ट लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सप्रेस करेंगे 72 को इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, multiply by 3 is 72. Now let me take another example. Let us take 84. 84 को भी फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. 2 4s are 8, 2 2s are 4. अगेन क्वोशिएंट को हम डिवाइड करेंगे लोएस्ट प्राइम नंबर से. 2 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब ये 21 क्वोशिएंट आया. 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 के बाद, 3. 3 7s are 21. अब ये 7 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, ना ही 2 से डिवाइड होगा. तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5. 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7. 7 1s are 7. सो 1 आ गया. स्टॉप करेंगे. तो 84 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 multiply by 7. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 multiplied by 7 is 84. So by this way you can prime factorize any number. Let me take some larger number, 2907. Let me factorize it. Now it is not divisible by 2. Why it is not divisible by 2? Because it is an odd number. Only even numbers are divisible by 2, right? Let me check with the next prime number. कौन सा होता है, 3. 3 से चेक करेंगे. 9 इसके काउंट करो डिजिट्स को. 9 + 2 11 + 0 11 + 7 18. सो इट इज डिविजिबल बाय 3. 3 से डिवाइड कीजिए आप. 9 3s are 27, then 3 6s are 18 and 9 3s are 27, right? Again it is divisible by 3. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now 3 2 3. It is divisible by 3. 3 2 5 plus 3 no. Next prime number check करेंगे 5. Is it divisible? No. क्योंकि यहाँ पे 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए. Then it is divisible by 5. Otherwise it is not. Then next prime number कौन सा होता है, 7. 7 से ये डिवाइड होता है, नहीं हो रहा. ठीक है. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11. 11 से डिवाइड होएगा, नहीं होएगा. ठीक है. यू कैन चेक द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑल्सो. देन 13 से भी ये डिवाइड नहीं होता. देन नेक्स्ट इज 17 से ये डिवाइड होता है. 17 1s are 17, राइट. देन 163 आता है. 17 9s are 163, राइट. तो ये 17 into 19 is 323, राइट. मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार.
3 2 3 17, 17 ones are 17, राइट, 6 1 3 163 है, तो 17 9s are 163 होता है, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 0. सो 19 वी गॉट एज अ क्वोशंट. अब 19 को आगे प्राइम नंबर से करो डिवाइड, तो 19 को 19 ones are 19, राइट. हियर वी स्टॉप एंड so we'll write the product of prime factors of 2907 as 3 multiplied by 3 multiplied by 17 multiplied by 19, right. Now I'll check another number 8712, right. इसको भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 2 से डिवाइड करो, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 6s are 12, right. Again 2 से करो, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 8s are 16, right. Again you can divide by 2 because it's an even number. 2 1s are 2 0, 2 10s are 20 कर लो, 2 8s are 16, 2 9s are 18. Now it's not a even number, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से चेक करते हैं, 8 + 9 8 + 1 9 9 + 9 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 3s are 9, right. 363 is divisible by 3, 1 2 and 1, right. Now 1 to 1 is not divisible by 5, it is not divisible by 7, it is divisible by 11. 11 multiplied by 11 is 121. लास्ट में 11 आया, तो 11 को दोबारा 11 से करेंगे तो विल बी गेटिंग 1. सो वी कैन राइट 872 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. क्या, 2 multiply by 2 multiply by 2, then multiply by 3 multiply by 3 multiply by 11 multiply by 11. This is the prime factors of 8712. Now इस मेथड से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, राइट. प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. थोड़ा इसमें आपको और थोड़ा इजी और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ पावर. सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ पावर, मैं आपको बताता हूँ. लाइक हमने कोई 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 टाइम्स, तो यू कैन राइट 2 raised to power 2, राइट. इफ 2 को हमने 3 टाइम्स किया तो यू कैन राइट 2 raised to power 3. सिमिलरली 2 को अगर हमने 5 टाइम्स किया तो यू कैन राइट 2 raised to power 5. नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज मल्टीप्लाइड. गेटिंग. सपोजिंग कोई x multiply by x multiply by x multiply by x अप टू n टाइम्स अगर हमने किया तो यू कैन राइट x raised to power n. Got it? This is a general formula. x multiply by x up to n times, so you can write x raised to power n. Similarly, if you write 3 multiply by 3 multiply any number, 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 1 2 3 4 5 6, supposing 6 times, so you can write 3 raised to power 6. Got it? Any number 5 multiply by 5 multiply by 5, you can write 5 raised to power 3. बस ये याद रखना है, जितने बार वो मल्टीप्लाई हुआ है उसको उतनी वो उसकी पावर हो जाएगी, राइट. सो वी विल यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ पावर इन अवर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो हमने जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी 72 की व्हाट वाज द 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, right. Instead of writing like this, you can use concept of power. You can write कितने 2 है 1 2 3, you can write 2 raised to power 3 multiply by 1 2 3 कितने 2 हैं 3 raised to power 2. Similarly for 84 हमने प्राइम फैक्टर्स करी थी. प्राइम फैक्टर्स क्या थे 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7. How many 2 are there? 2 2s are there, 1 2, तो हमने raised to power 2 कर दिया, and 3 is single, so as it is 3
multiply by 7 is single, right? And similarly 872 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, प्रोडक्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, राइट? तो इसमें वी कैन राइट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ पावर 2 रेज्ड पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज्ड पावर 2. Got it? So in this way you can use the power concept also. So I hope you have understood the concepts. Now for your homework, you write all the prime factors of 14, 34, 260, right? Also this is question number 1, prime factors of 14, 34 and 260. Also express these numbers. You can take one higher number also, 9702, also 620. Then express these numbers as the product of prime factors. मतलब इसकी prime factorization भी करके दिखाओ. And the answer should be appearing in the comment box. Comment box में आप इसके सारे answers दीजिए. I hope you have understood. Now, if you have still any doubt or query, you please feel free to write your doubts in the comment section. I will definitely reply to your queries. Further, if you have understood and liked my videos, please press the like button and share it with your friends. Also, please do not forget to subscribe my channel so that you can get in touch with all my upcoming videos. Thank you. God bless you. Have a wonderful day. Bye bye.